Good morning to all of you students. Today we start class 12 physics. Next topic in electrostatics. In previous video we derived the relation between electric field and electric potential and variable field, and in this video we derive relation for electric potential energy. So Q1 Q2 and distance between Q1 Q2 is R. If we collect charge particle, then the amount of work is stored in the form of energy. If we collect charge particle, then small work is to be done, is known as potential energy, and Q1 Q2 distance between Q1 Q2 is R. Then small amount of work done dW equal to F vector dot dr vector, यानी F dr cos theta. If theta equal to 180 degree, then dW equal to F dr cos 180 degree, then dW equal to F dr minus total work done W equal to integration infinite to R dW W equal to infinite to R, and the value of dW is माइनस का F dr. W equal to integration R, and the value of F is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square dr. We take common minus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught infinite to R 1 upon R square dr माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू R की पावर -2 dr. तो W इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन R की पावर -2 + 1 इंटीग्रेशन करेंगे तो देन लोअर लिमिट इनफाइनाइट एंड अपर लिमिट इज R. स्टूडेंट W इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू R. माइनस इज कैंसिल बाय माइनस, तो W इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -1 न्यूटन उठा के पॉजिटिव. देन W इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट. स्टूडेंट 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R. देन we know that work is stored in the form of energy, so W equal to U, and U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. Students, listen carefully. Electric potential energy, we take 2-point charge system. This is case first. 2-point charge system Q1 and Q2, 2-point charge, and the distance between charge is R. Then small amount of work done dW equal to F vector dot dr vector. When we remove the vector, then cos theta is come, and it is straight line, so the angle is 180 degree, and the value of cos 180 is -1. So dW equal to minus का F dr. Total work done W equal to lower limit infinite and upper limit is R, because we take particle from infinite to all distance point. So lower limit is infinite, upper limit is R dW. So W equal to infinite to R, and dW का जो वैल्यू है माइनस का F dr. F का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr. W इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इनफाइनाइट टू R 1 अपॉन R स्क्वायर dr. W इक्वल टू माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू R की पावर -2 dr. W इक्वल टू
माइनस का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू r, देन W इक्वल टू माइनस इज कैंसिल बाई माइनस एंड Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -1 अपॉन 1 इनफाइनाइट टू r. Then we put the limit in next step, then 1 upon r and 1 upon infinite. Firstly we put upper limit and minus lower limit. Then W equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught 1 upon r. Student, we know work is stored in the form of energy. Then our formula is U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r. This is the formula for electric potential energy for 2-point charge system. If we take 3-point charge system, then we take 3-point charge system, then this is Q1 charge, this is Q2 charge and this is Q2 charge, Q3 charge. Distance between Q1 Q2 R12 and R21 and this is R31. Then our formula is for 3-point charge system U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is common and bracket Q1 Q2 upon R12 Q2 Q3 R21 Q3 Q1 Q3 Q1 R31. This is the formula for 3-point charge system. U 1 upon 4 pi epsilon is common, Q1 Q2 upon R12, Q2 Q3 upon R21, Q3 Q1 upon R31. This is formula for 3-point charge system, and we take 4-point charge system. 4-point charge system. For example, this is a 4-point charge system. This is charge Q1 and this is charge Q2 and this is charge Q3 and this is charge Q4. Distance between Q1 and Q2 R12 and R23. Then R34 and this is R41 and Q1 Q3 distance R13 and Q2 Q4 distance R24. Our formula is U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is common, then Q1 Q2 upon R12 Q2 Q3 upon R23 plus Q3 Q4 upon R34 Q4 Q1 upon R41. स्टूडेंट इस स्टेप को मैं थोड़ा सा इसी साइड में लिखता हूँ. Q2 Q3 तक हमारा हो गया. अब आएगा Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 upon R34 and Q4 to Q1 R41 plus Q1 to Q3 R13 and Q2 to Q4 R24. ठीक है स्टूडेंट्स, U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q4 upon R34 Q4 Q1 upon R41 and Q1 to Q3 of R13 and Q4 to Q2 is R24. स्टूडेंट इस टाइप से हम 2-point चार्ज, 3-point चार्ज और जितने ही पॉइंट चार्ज हों उनके लिए हम एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. इन नेक्स्ट वीडियो वी ड्राइव इक्विपोटेंशियल सरफेस.